Welcome programmers. Today we'll discuss about JavaScript variables. Variables means like we can store any value to the variable. जैसे मैंने लिख दिया x equals to 10 हम लोग ऐसे मैथ में we have studied right. So x हो गया variable. Suppose if I write like x equals to 10 it means this 10 is storing into x. हम लोग इसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे मान लो ये मेमोरी बॉक्स है ठीक है जैसे लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 मीन्स a पे हो गया x एंड इसमें 10 असाइन हो गया सो दिस इज 10 अभी हम लोग x को भी बाद में रीअसाइन कर सकते हैं लाइक पहले x इक्वल्स टू 10 हो गया देन वी कैन रीअसाइन टू x इक्वल्स टू 12 so the box name will be the same but the value will be changed now the 12 will point to the x we will discuss about scope what is scope scope का मतलब क्या है सो स्कोप का मतलब हो गया जैसे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं ना अरे भाई तेरा इस कंपनी में तेरा स्कोप है मतलब क्या है इट मीन्स लाइक उस कंपनी में ही इज एक्सेसिबल सो इन द सेम वे दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन दैट एरिया दिस इज द एरिया सो इस एरिया के अंदर x इज एक्सेसिबल x का वैल्यू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सो दैट इज द स्कोप स्कोप के लिए दो तीन चीज है एक हो गया ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप मीन्स like that variable is declared as globally that is like globally accessible if I declare the variable x is to 10 I can access in here कोई भी जगह से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं दैट इज मीन ग्लोबल स्कोप लोकल का मतलब क्या हो गया मान लो दिस इज द एरिया फॉर द एक्स इसके बाहर एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते सो दिस इज द लोकल स्कोप फॉर एक्स और जब एक्स को हम लोग बाहर से डिक्लेयर करेंगे दैट इज द ग्लोबल स्कोप ओके नाउ इफ विल कम टू द ब्लॉक स्कोप क्या हो गया जैसे if we'll write something the curly basis with this we'll say like this is the block as of now I can say if or else or like switch ऐसे और लाइक फॉर सो दिस विल कॉल लाइक द ब्लॉक स्कोप का मतलब हो गया जैसे जो कर्ली बेसिस हम लोग ऐसे लिखे ना सो इन दिस स्कोप सो इन दिस एरिया द वेरिएबल इज एक्सेसिबल उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्कोप देन लास्ट में द फंक्शन स्कोप कोई भी फंक्शन हम लोग लिखे राइट सो फंक्शन के अंदर जो इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एंड सो इस फंक्शन के अंदर ही ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा तो इसलिए बोलते हैं दिस इज द फंक्शन स्कोप थ्री ways टू डिक्लेयर द वेरिएबल एक हो गया var let and constant var क्या होता है var is basically the function scope जैसे मैंने लिख दिया var x equals to 10 जब मैं var x equals to 10 बाहर डिक्लेयर करूंगा then it behaves like a global वेरिएबल बट जब मैं इसको फंक्शन के अंदर लिखूंगा मान लो कोई भी फंक्शन है p हम लोग बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑन दोस थिंग्स ओके बट इसके अंदर हम लोग इसको एक्सेस करेंगे लाइक var now if so this var x equals to 10 and if I do the console log okay console log x now we'll see what is happening basically if we run this code we can see it is giving me the 10 so x is accessible in the function okay let's see if we'll try to access outside of the function outside of the function now trying to access the x what is happening see it's saying it's like throwing an error like reference error x is not defined because
x is a function scope, मतलब स्कोप का मतलब तो हम बता दिए, लाइक इट इज एक्सेसिबल इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स, ठीक है। तो x is accessible in the function scope, इट्स नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, बाहर करेंगे तो इट्स अ ग्लोबल। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे लेट के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, इफ आई डिक्लेयर लेट y इक्वल्स टू 12, तो जब हम लोग इसे बाहर डिक्लेयर करेंगे y विथ लेट कीवर्ड, दैट मीन्स इट्स अ ग्लोबली एक्सेसिबल। बट जब हम लोग इसको ब्लॉक के अंदर रखेंगे, ब्लॉक में अब तो डिस्कशन के ब्लॉक इज बेसिकली लाइक विल से लाइक इफ, एल्स और स्विच, और कोई भी कंडीशन हो गया, या कोई भी यू नो द फॉर लूप, द लूप्स हो गया, उसके अंदर जो हम लोग इसे कार्ली बेसिस लिखते हैं, तो इसके अंदर हम लोग बोलते दिस इज कॉल्ड लाइक ब्लॉक स्कोप, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया इफ, ये सब चीज बाद में हम लोग सीखेंगे, लाइक इफ के अंदर क्या काम करते कैसे, ठीक है। अभी इफ के अंदर मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया इफ y इक्वल्स टू 12, now I'm trying to access of, I'm just printing y, okay. Now if I'll try to outside also, let's see what will happen outside of blocks। तो अभी हम इसको कमेंट करते, कमेंट वैसे डबल स्लैश देंगे सामने तो इसको कमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी what happened, the first y is giving me the value, that is this, and outside of the block when I'm trying to access y, then it's throwing an error like reference error, y is not defined। Let are the basically the block scope, var is the basically for the global scope, ठीक। अब constant क्या हो गया, constant also block scope, but there is a difference between let and constant। constant का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, देन वी शुड इनिशियलाइज दैट वेरिएबल एंड वी कांट रीअसाइनिंग द वैल्यू। सपोज मैंने लिखा कांस्टेंट x इक्वल्स टू 10, अभी मैंने मान लो इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, सो देखो रन करने से पहले मुझे कंपाइल एरर दे रहा है, सी द कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। नाउ यू कैन डू x इक्वल्स टू 10, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज जब हम लोग इसको लिखेंगे then we have to initialize with the declaration। now if I try to reassign in the value, जैसे मैंने कर दिया x equals to 12, तो देखते क्या होते हैं, console.log x, ठीक है। it's throwing an error because the assignment to constant variable is not, this is a type error, means we should remember about the variables, later we will discuss advanced things। Thank you guys for watching the video, we will meet in the next session।